Voice sound check. Hello, hello. Okay. So, hello everyone. Hello everyone. Welcome back to another live session. So last time we talked about HTML and HTML elements, and previously we have already talked about CSS, see how CSS works, what are CSS selectors, and how we can select and provide different styles using properties and their values. So today we are going to dwell more deeper into the CSS, and so we are going to discuss more about their pair elements relationships among them, and how we can select various different elements, and how we are going to target these elements and their special properties and states at the same time. So today I'm also going to take the Hindi session as well. So कैसे हैं आप लोग? आप जानते हैं कि हमने अभी तक CSS और HTML के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और HTML के बारे में थोड़ा और पढ़ लिया है। तो आज के सेशन में हम CSS में और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि CSS में हेलो हेलो ओके, जहाँ पर हम बात करेंगे कि CSS में और स्टाइल्स कैसे लिए जा सकते हैं, और हम कैसे स्पेशली एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, ना कि उनके नाम के अलावा भी और उनके आईडीज के अलावा भी. So we are going to start with the parent-child relation, child elements. So what are parent-child elements? In HTML, parent-child elements are the elements which contain another element. So the containing element is called the parent that contains the another element, and the element that is contained within another element is called a child element. For example, अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो HTML में पेरेंट एलिमेंट वो एलिमेंट हो गया जिसके अंदर एक अलग से एक एलिमेंट स्टोर किया गया या कंटेन किया गया है, और कंटेन्ड एलिमेंट वो या चाइल्ड एलिमेंट वो हो गया जो खुद एक पेरेंट कंटेनर एलिमेंट के अंदर कंटेन्ड है. For example, if we talk about that element, for example, here the input element is the child element of the form element. That is, the form element is the parent container which contains the input element. और अगर इसे हमें हिंदी में बोलें तो हमारे यहाँ पर इनपुट एलिमेंट जो है वो खुद एक चाइल्ड एलिमेंट है जो कंटेन्ड है इनसाइड फॉर्म एलिमेंट जो एक पेरेंट हुआ हमारे एलिमेंट का. अगर हम इसे प्रॉपरली फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वी कैन डू लाइक दिस कि we have a div element in which we have another paragraph element which says this is a child element. ओके, सो अगर हम देखें तो इसमें हमारे div एलिमेंट के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो एक चाइल्ड एलिमेंट हुआ हमारे div पेरेंट का, और div हमारे पैराग्राफ का पेरेंट एलिमेंट हुआ. सो यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन टारगेट मल्टीपल एलिमेंट्स इन द CSS. सो हम CSS में इसको कैसे स्पेशली टारगेट करेंगे अगर हमें करना हो. सो in this, for previously we know that if we want to target a specific element such as div, so we can just do div and provide styles for it. For example, if we have a style, we can give it a background color of red. Oh, 1 second. Okay, so we can give it a background color of red. In this, so we can see that the element is given the background color of red. And similarly, if we want to give the paragraph element a specific color, we can give it a color of white. For example, if we check in the page, sorry for the zoom. So if we check in the page, the paragraph is colored as white. But if we have a specific हमारे पास अगर मैं इसे हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो हम जैसे ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें स्टाइल करना है डिव और पैराग्राफ को, हम डायरेक्टली डिव को भी टारगेट कर सकते हैं और पैराग्राफ को भी टारगेट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने डिव को एक रेड कलर बैकग्राउंड दिया है और हमने पैराग्राफ को व्हाइट कलर टेक्स्ट कलर दिया है. बट अगर सिमिलरली हमारे पास कोई और एक और पैराग्राफ भी हो
That is, if we have a separate paragraph here, which is an open paragraph, that is this is top level. मतलब कि इस पैराग्राफ की कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है और ये हमारा टॉप लेवल पैराग्राफ है. सो इफ वी सी दिस इन द HTML, we will see that the element here is not showing. What does it mean? So if we try to understand it, we can see in the inspect as well that the paragraph is still here, but we cannot see it. दिस इज बिकॉज हम अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो हमारा पैराग्राफ अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. इफ इट अगर हम इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करें तो हम इसे देख सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने जो div के अंदर के पैराग्राफ को हमने स्टाइल देना था, वो स्टाइल हमारे सब एलिमेंट्स के ऊपर आ चुका है, सब पैराग्राफ्स के ऊपर आ गए जो भी हमारे कंपोनेंट में एग्जिस्ट करते हैं. सो हमें कुछ ऐसा चाहिए, दैट इज वी नीड समथिंग दैट स्पेसिफिकली टारगेट्स द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द div. कि हमें स्पेसिफिकली ऐसा एक स्टाइल चाहिए जो हमारे डायरेक्टली div को टारगेट करेगा. वन सेकेंड, आई जस्ट कीप इट हियर. ओके. उसके लिए फॉर दैट वी कैन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन द CSS. या हम इसके लिए हम अपने CSS में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यूज करके हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि हम वाइट कलर किसको देना चाहते हैं. और इन अनदर वर्ड्स, we can directly target ki which style we need which element or which paragraph or which child do we need to give the white color, not the entire element itself. So to do that, we can directly give the child element child selection child selector or descendant selector like this. Ki there is a div container which has another paragraph container whose colors need to be white. So if we save this, we will see that the white color only exists on the child element. अगर हम इसको रील और देखें तो हम बता सकते हैं कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यूज करके हम CSS बनाना चाहेंगे, उसमें हम div के बाद ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का नाम लिखेंगे. तो इससे क्या होगा, हमारा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या डिसेंडेंट सेलेक्टर बन जाएगा, जिससे हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं हमारे पी टैग को जो एक div के अंदर है. तो इससे क्या होगा, हमारा ऊपर हमारा एक्सटर्नल हमारा टॉप लेवल पैराग्राफ को कोई स्टाइल नहीं मिलेगा. दैट इज अवर टॉप लेवल पैराग्राफ वोंट गेट एनी स्टाइलिंग, बट द descendant paragraph will get a styling. So if we do the same thing in this, if we copy another thing, we will see that the next paragraph also get a same styling. But डिसेंडेंट सेलेक्टर का एक और चीज है कि दिस इज नॉट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. अगर आप VS कोड में भी देखने की कोशिश करें कि div और p के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, डायरेक्ट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, दिस इज एन एंसेस्टर और अ डिसेंडेंट सेलेक्टर. तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो ये डॉट्स है ये कह रहा है कि बीच में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. अगर div के अंदर इफ दैट इज इफ इट इज सेइंग दैट it doesn't matter कि p is a direct child of div. This selector says that the paragraph needs to be a descendant of div. That is the p tag जो भी है वो हमारे div का direct child नहीं होना चाहिए, या हो भी सकता है, but it primarily needs to be a descendant. मतलब div के अंदर कहीं ना कहीं ये p tag होना चाहिए. तो अगर आप देखें कि अगर मैं div के अंदर एक और div डालूं जिसके अंदर पैराग्राफ होगा, फॉर एग्जाम्पल, so you will see that this paragraph also gets a style. So in this case, we can see that if we remove this, if we do use some other element itself, for example main, कि अगर हम div की जगह कोई और एलिमेंट के बीच में भी पैराग्राफ को डालने की कोशिश करेंगे, हम देख सकते हैं कि वो एलिमेंट अभी भी पैराग्राफ वाइट है, बट हमारे यहाँ पर हमारा ये मेन के अंदर चाइल्ड था. So we can see that the element just needs to be a descendant of a particular element according to this selector. So we can just style them according to this. Okay. So after that, as I told you that this is a descendant selector. So there needs to be something कि we have a direct child relationship. तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक डिसेंडेंट सेलेक्टर है. डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब पेरेंट चाइल्ड के कहीं भी किसी भी डेप्थ पे होगा तब भी इसे ये स्टाइल यूज होंगे. So if we want to style it properly with a child parent direct parent child relationship, not a grandchild or a great grandchild relation, we can use a specific symbol or an operator called this child selector. According to this,
अगर हम इसके बारे में डायरेक्टली बात करेंगे तो हमें एक चाइल्ड सेलेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए जो हमारा एलिमेंट के बारे में बात करेगा, जो हमारे डायरेक्टली बताएगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। वन सेकेंड। ओके। सो अकॉर्डिंग तो हमारे अकॉर्डिंग था कि हमें एक डायरेक्ट ऐसा सिंबल चाहिए या ऐसा ऑपरेशन चाहिए जिसके थ्रू हम डायरेक्टली पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप करें, ना कि ग्रैंड चाइल्ड, ना कि ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। So for that, we have a particular selector or symbol called child selector. So if we look in directly in the VS Code, it will show that this needs to be a direct child. This paragraph needs to be a direct child of the div, not a great grandchild or not another at another depth. So if we just save this, then we can see that the style only applies to the tag which are direct descendants or which are direct children of the div element. So अगर हम अब इसको देखने की कोशिश करें तो हमें इससे दिखेगा कि उसी पैराग्राफ को वाइट कलर यूज हुआ है जो डायरेक्टली डिव का चाइल्ड है। ये डायरेक्टली डिव के चाइल्ड का मतलब है कि डिव के नेक्स्ट लेवल पर ही जो पैराग्राफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ना कि किसी और डेप्थ में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेन के अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट था पैराग्राफ का, पैराग्राफ एलिमेंट था, उसको वो वाइट कलर यूज नहीं हुआ है। ओके। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ओके। नाउ वी कैन तो हम अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइल सेलेक्टर की, जिसको हम कहते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, मतलब कि द एलिमेंट्स विच आर द चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट। मतलब कि जैसा हमारा यहाँ डिव एलिमेंट है, जैसे हमारे इस डिव एलिमेंट की ही बात करें अगर, सो इफ वी टॉक अबाउट द div element only, we can see that there are the div element has two children, a p tag and a main tag. So in this we can see that there is another, and a main tag also has a p selector. So in this we can say that we can use the sibling selector in such a way, so we can specify and style an element which comes after a particular element. So हम इसका यूज वहां पर कर सकते हैं जहां पर हमें स्पेसिफिकली उस एलिमेंट को सिलेक्ट टारगेट करना है जो हमारे एक चूज किए हुए एलिमेंट के बाद है। जैसे कि हमारा हमने फॉर्म में बात की गई थी, लाइक वी टॉक्ड इन फॉर्म्स, that there needs to be there is always going to be a label after a label before an input. So what we can do is we can put specific styles on an input which always comes after a label. So इसके so हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ऐसे इनपुट को एक स्पेसिफिक स्टाइल दे सकते हैं जो हमेशा एक लेबल के बाद आए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक नेम का यूज करूँ फॉर्म के अंदर, और एक और सिंपल इनपुट एलिमेंट यूज करूँ जिसमें हम डेट जिसमें हम नंबर पुट करेंगे, बट हम इसके लिए एक लेबल नहीं देंगे। तो अगर मैं स्टोर करूं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वन सेकेंड। ओके। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इसका ये अगर हम जनरल स्टाइलिंग दें इनपुट को, जैसे इनपुट का स्टाइल्स आ गया। सो if we style input in such a way that, for example, those input which do not have a label will have a height of 50 pixels. हम ऐसे इनपुट हम क्या करेंगे, इनपुट को वो स्टाइल देंगे जिसमें अगर किसी इनपुट, जनरली सब इनपुट्स को हम देंगे 50 पिक्सल्स की हाइट, बट अगर किसी इनपुट से पहले एक लेबल आता है, विच मीन्स इफ देर इज अ लेबल बिफोर एन इनपुट, we are going to give it a height of 20 pixel, saying if there is a label you don't need to be a large size। मतलब कि अगर तुम इस एक इनपुट के पास एक लेबल अवेलेबल है तो उस इनपुट की हाइट 20 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस लेबल के साथ वाले इनपुट की हाइट 20 पिक्सल हो जानी चाहिए, बट हमारा जो इनपुट एलिमेंट है जिसके पास कोई लेबल नहीं है उसके लिए हमेशा हाइट रहनी चाहिए 20 पिक्सल। तो अगर हम हमारे एलिमेंट को सेव, HTML को सेव करेंगे। ओके।
One second. Okay, let me see. Okay, okay, okay. So in this case, we can, as I already said, the the general sibling selector always targets an element which has siblings to that. So this means the label is also a sibling of second element itself. So I had a misconception there. Sorry. So according to this, the number also has the label is also sibling of number element. So if we wrap this in a, if we wrap this in, I mean, okay, if we wrap this in div, and at the same time we wrap this in a div, so then we can see that the styles are not applying to that, applying to a particular label, input which does not have a label with itself. So in this, we can see that we have given a style. For example, let's give another input, a style width of 30 pixels. So in this, we can see that the height is applied to both the input elements, but the width is applied to both the elements, but the height has been changed for the element which has a label in it. Okay, one second. Okay, okay. So let's now talk about the adjacent sibling element selector. Okay, now this is the this is the element. For example, the previous selector, previously what we talked, this selector is a selector. Previously, this selector was used to select the general sibling. That is the element only needs to be a sibling. That is needs to only have a same parent. मतलब कि इस selector के हिसाब से the element only needs to be a sibling. मतलब कि उसका सिर्फ उसका काम था सिर्फ एक सिबलिंग होना किसी और एलिमेंट का. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली एज आई सेड, according to this structure, according to this symbol, the input only needs to be the label only needs to be a sibling to the input number. So that is why both the styles are have been applied to this element. But now we need a relationship where the element needs to be a direct sibling or the next sibling itself. So in this case, the way what I wanted to do earlier was that only the input element which was directly preceded by a label needs to be styled. मतलब कि अगर कोई इनपुट टेक्स्ट एलिमेंट इसमें रिकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई इनपुट है जिससे डायरेक्टली पहले एक लेबल था उसी को स्टाइल देना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या अगर मैं उसके लिए हम क्या स्टाइल यूज उसके लिए हम कौन सा सिलेक्टर यूज करेंगे? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर. एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर को यूज करने का सिंबल हमारे पास ये है. नहीं, हमारे पास प्लस सिंबल है. प्लस सिंबल का मतलब है कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट ही हमारा इनपुट स्टाइल टारगेटेड एलिमेंट होना चाहिए. सो इफ वी रिप्लेस दिस विद अ प्लस, then we can see what I wanted earlier was that the only this input will be styled because it is followed by a label element. तो मैं यही चाहता था पहले करना कि मुझे सिर्फ उस इनपुट को स्टाइल करना है जो लेबल से फॉलोड है. नॉट कि लेबल कहीं भी उसके भाई सिबलिंग्स में आ रहा है. दैट इज इट हैज सेम पेरेंट. इट नीड्स टू बी डायरेक्टली फॉलो प्रीवियसली प्रिसीडेड बाय अ लेबल. ओके. अब अगर हम इसको सबको एक साथ जोड़ें तो हम इसको प्रॉपर्ली इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. सो नाउ इन द एंड if we combine everything, we can style it like this. So let me do this. Okay, so we already have a content in this, so let's go with this. Div needs to be background color red. Div with a general descendant selector, that is every p element will have a font size of uh, 20 pixels. मतलब कि हर पी एलिमेंट का जो भी पी एलिमेंट इस div के अंदर होगा उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स होगा. और जो भी हमारे डायरेक्ट सिबलिंग हैं, जो भी हमारे div के जो पैराग्राफ हमारा डायरेक्ट सिबलिंग है, उसका
स्टाइल इटैलिक होगा। उसका स्टाइल इटैलिक होगा, या फिर हम कर सकते हैं उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। सो विल जस्ट अंडरलाइन इट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी दैट कि हम इसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि हमारे जो भी हमारे पी एलिमेंट डायरेक्टली डिव के अंदर हैं, या जो भी पी एलिमेंट्स हमारे डिव के अंदर हैं, उनको हमने एक फॉन्ट साइज दे दिया 20। दिस मीन्स दैट दिस स्टाइल इज एप्लीकेबल टू ऑल द p tags which are inside a div, but the underline is only given to that element which is directly under the div element and not any other depth. And if we go with the sibling selectors, what we can do is okay, I will have another element, what is main, another div, and give it a head, give it a heading of this is a heading 2. Okay, so now or we can do it, or we can do we can give it a p set. Yeah. Okay, or what we can do is, now we'll talk about the sibling selectors and revise them. So now after this, we'll give the general sibling selector, where every main tag that is a general sibling, or a sibling of p, needs to have a width of 20 pixels. और इसको शो करने के लिए what will put a outline in it. Okay, 20 pixels is too small. Okay, so now हम इससे देख सकते हैं कि हर वो मेन टैग जो p के बाद, p का कहीं भी सिबलिंग है, उसको हम स्टाइल दे देंगे विद अ विड्थ ऑफ 50 पिक्सल्स। ओके, इससे क्या होगा, अगर मैं इसको सेव करूं, हमारे बोथ मेन टैग्स को सेम स्टाइल लगेगा। बट अगर हम बात करें डायरेक्ट सिबलिंग की या एडजेसेंट सिबलिंग की, सो वी कैन यूज द सेलेक्टर प्लस to target a main which is directly preceded by a p tag that is a height of 200 pixels. Okay, so by this we can see that there are different types of selecting methods by which we can select the elements. तो इससे हम देख सकते हैं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से भी हम सिलेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, ना कि हमें टारगेटेड सिलेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे फॉर यूजिंग आईडीज और सीएसएस। तो हम इस एलिमेंट रिलेशंस के थ्रू भी हम अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम स्टाइल करते हैं। जहाँ पर हमारे एलिमेंट टैग्स की जगह हम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी हम आईडीज को भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग द एलिमेंट टैग्स वी यूज द आईडीज and the classes. Okay, so now let's talk about another topic in CSS, which is the CSS states and the special selectors. So first, we'll talk about pseudo selectors. One second. Okay, so first, before doing anything, we'll talk about what are pseudo classes and pseudo selectors. Pseudo classes क्या, तो हम बात करेंगे pseudo classes के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि हमारे हर एलिमेंट के साथ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी यूज होती हैं या स्पेशल स्टेट्स होती हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारा अभी एलिमेंट सिर्फ शो हो रहा है, करंटली अवर एलिमेंट इज जस्ट बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन, फॉर एग्जांपल दिस एलिमेंट इज जस्ट बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन, बट एज सून एज आई हवर इट, देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ एलिमेंट। बट अब बात यह है कि हमारे एलिमेंट में काफ़ी स्टेट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा या माउस इसके ऊपर रखूंगा, तो हमारे एलिमेंट के अंदर हमें नहीं दिखेगा, बट देर इज हमारे पास एक स्पेशल स्टेट यूज होगी जिसको हम कहते हैं hover स्टेट। अब इन स्टेट्स को हम सीएसएस में कैसे यूज करें, उनके लिए हमारे पास सूडो क्लासेस यूज होती हैं। सूडो क्लासेस कुछ नहीं होते हैं, बस एक लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बताने अपने सीएसएस में स्टाइल करने के लिए। जैसे कि हमारे पास और सूडो क्लासेस को यूज करने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है,
element, single colon, and after single colon we'll have a list of pseudo classes. For example, this starts from here. We can see there are a lot of states which a element can be in. हम इस लिस्ट से देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट किस बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टाइप. जैसे कि अगर हमारे पास इनपुट होगा तो इनपुट ब्लैंक हो सकता है, रेडियो एलिमेंट चेक्ड हो सकता है, डिस बटन डिसेबल्ड हो सकता है, टेक्स्ट एम्प्टी हो सकता है. उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं हवर स्टेट और फोकस विजिबल, फोकस विद इन एंड फोकस स्टेट. अब जैसा मैंने कहा, व्हाट इज हवर स्टेट? ओके, एज सुन एज वी जब भी हम अपना माउस या एज सुन एज वी मूव अवर माउस टुवर्ड्स एन एलिमेंट और ओवर एन एलिमेंट, तो हमारा एलिमेंट एक स्टेट में चला जाता है जिसे कहते हैं हवर्ड स्टेट, जिसके अंदर हमारा जब माउस वो बताती है स्टेट कि हमारा माउस, which tells that our mouse is over an element. So if we use this state, we can specifically target an element when a mouse is hovering over it. So इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट को उस तरीके का स्टाइल दे सकते हैं जो डिफाइन करता है जब हमारा एलिमेंट माउस हमारे एलिमेंट के ऊपर हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पी टैग है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द पी टैग अ साइज ऑफ 10 pixels. Okay, but as soon as I hover it, I will give it a font size of 16 pixels. So इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि according to this, the the paragraphs will by default have a font size of 10 pixel, but as soon as I hover over it, okay, as you all know that a p tag is a block level element. So in the entirety, whenever I hover over this section, it will cause a hover state to trigger. मतलब कि क्योंकि हमारा p एलिमेंट एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर जब भी मैं हवर करूंगा, वो हमारे p एलिमेंट का हवर स्टेट एक्टिवेट कर देगा. सो अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो हमारे p एलिमेंट का हवर स्टेट एक्टिव हो गया, जिसने हमारे p हवर का स्टाइल को एक्टिवेट कर दिया, जिसके थ्रू इसे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स मिल गया. ओके, सो इसी के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडो क्लासेस को टारगेट कर सकते हैं. वन सेकेंड. ओके, सो इसके थ्रू हम अपने डिफरेंट स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं. उसके बाद जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया कि हमारा हवर स्टेट क्या करता है, उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल सिलेक्टर्स की. अब स्पेशल सिलेक्टर्स क्या हो गए? अब हम जानते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं, हमारा HTML, हमारा वेब ब्राउज़र बहुत इंटेलिजेंट है. उसके अंदर क्या सिस्टम, उनके अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. We know that our browser is smart and it has implemented a lot of things to ease us to style things. So in order to make those features available to us in CSS, we have different types of selectors. For example, अगर हम इसमें देखें, हमारे पास काफ़ी दो मेन टैग्स हैं हमारे पास एलिमेंट को, बट हम स्पेसिफिकली कैसे टारगेट करें कि हमें फर्स्ट मेन को स्टाइल करना है या सेकंड मेन को. हम कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम टारगेट करना चाहते हैं थर्ड मेन को, हम सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स को यूज करके हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं सेकंड मेन को, जिससे कि हम उसको स्टाइल दे सकें फॉन्ट साइज. ओके, या फिर हम उसे बैकग्राउंड कलर दे सकें. ओके, इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने सेकंड एलिमेंट को सेकंड मेन को टैग किया. बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, एंड दिस मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड. So CSS has given us various special selectors to target these elements. So what we'll do is we'll use the main class and using the pseudo classes which tell about the state of the element. इसके थ्रू हम pseudo classes को यूज करके स्पेशली टारगेट करेंगे एलिमेंट्स को, जिसके लिए हमारे पास एक स्पेशल pseudo क्लास अवेलेबल है, nth child. अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हम इसमें स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं हमें कौन सा चाइल्ड एलिमेंट चाहिए. जैसे कि हम बोलेंगे कि हमें फर्स्ट एलिमेंट को स्टाइल करना है एक रेड कलर में.
ओके सॉरी। ओके, जो हम इसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारा मेन एलिमेंट जो सेकंड चाइल्ड है हमारे div का, हम उसको टारगेट करना चाहेंगे। तो सिमिलरली अगर मैं 3 कर दूं तो हमारा थर्ड एलिमेंट जो सेकंड मेन एलिमेंट स्टाइल होगा। अब हमारे पास अ, हम डायरेक्टली नंबर की जगह हम थोड़े स्पेशल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑड यूज़ करके बोल सकते हैं हमें कौन से को टारगेट करना है, या इवन बोल के हम बोल सकते हैं कौन से चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट करना है, या वी कैन गिव इट अ नंबर n, जिसके अकॉर्डिंग ये कहता है सारे एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। बट हम इस वी कैन गिव कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस इन दिस टू टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई कॉपी दिस bunch of times. Okay, so now if we use odd, we know odd will target all the odd elements, and even will target even elements. But now what we can do is create complex equations. For example, if we do n plus 1, this means every element which is not a first element, or for example second element. Okay, 2n plus 2. Okay, for example 3n plus 1 will only target the element which is the after the third one. For example 3n will state, if we put n as 0, it will be the first element, but 0 is not available. So if we put n equals to 1, then it will be the fourth element. If we put n equals to uh, if we put n equals to 2, then it will be the seventh element, and so on. Similarly, if we do this n plus 1, and if we put n plus 3, if n is 1, then the third element will be selected. If n is 2, then the fifth element is selected, and so on. Okay, so now similar to nth child, we have first child and the last child. The first child states that the element needs to be the first child of its parent element, which means, जिसका मतलब है कि द एलिमेंट जो एलिमेंट हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए। जैसे कि बैकग्राउंड कलर रेड, तो हम सिर्फ उस मेन को टारगेट करेंगे जो हमारे पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है। एंड ऑल्टरनेटिवली हमारे वी हैव द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट एज वेल, जो हमारे विच टारगेट्स अवर लास्ट चाइल्ड। ओके, नाउ सिमिलर टू दिस कि वी आर एबल टू टारगेट एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट्स, बट what about the contrary, कि we need to target under a certain condition when it does not exist। मतलब कि हम उस एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं जब उसके अंदर कुछ वो चीज एक कंडीशन फॉल्स आ रही हो। जैसे अगर मैं इसे p की जगह div कर दूं और मैं चाहता हूं कि हर मेन के अंदर के p टैग को स्टाइल किया जाए। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, every element every p which is inside a main is being targeted for styling। Okay, but what happens if we want if there is a case where instead of directly having p, there are different types of elements that are used inside a main? For example, there is one h1, there is one uh, there is one span tag। So how do we target these specifically? द मेन थिंग बिटवीन देम, या इनमें सबसे कॉमन चीज ये है कि इनके अंदर पी एलिमेंट्स होने की जगह हम कोई और एलिमेंट्स ले रहे हैं। सो हम इसमें स्पेसिफिकली उनको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं जिनमें पी टैग नहीं है। सो टू डू दैट वी कैन यूज द नॉट सूडो क्लास। नॉट सूडो क्लास ये बताती है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम इसके अगर हम इसको करें, अगर इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें, हम कह रहे हैं कि हम उस मेन एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर चीज नहीं है, और जो पर्टिकुलर चीज या वट एवर कंडीशन वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब, वी कैन डिस्क्राइब इन दिस की, फॉर एग्जाम्पल दिस। सो अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि हम उस मेन को टारगेट करना चाहते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट चाइल्ड p नहीं है, which means these elements should not be styled and all these elements should be styled। So if I save this, one second, may not, okay, uh, one second,
Or I can give you another example, for example, dot disabled. Okay. And if I give some elements a class of disabled, so in this, we are going to style all the elements that are not disabled, that or do not have the class of disabled. So by this, we can target things which do not meet a specific condition. Okay. So I'll check the child one as well later on. So now what we can do is all the selectors we have learned, we can always combine them. Instead of directly having a single child element connect selector or a descendant selector or using pseudo class, मतलब कि हमें सिंपली एक सिंगल सेलेक्टर टाइप को यूज करने की जगह हम काफी सेलेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएं जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और हम उनके अंदर डालेंगे. ओके. सो ओके. नाउ अब हम चाहते हैं कि वी वांट टू स्टाइल यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर्स. सो व्हाट वी कैन डू, first we'll define what we want to do. ओके. सो नाउ हम चाहते हैं कि हम अपनी लिस्ट में सेकंड एलआई को टारगेट करें जिसमें हम उसको हवर होने पर उसका फॉन्ट साइज 1.2 टाइम्स कर 1.2 टाइम्स कर देंगे. दिस मीन्स we want to make a complex SQL. We want to make a complex CSS where we want to style a li elements hover state with the font size of 1.2 times, which is the second element of a UL. Which means if we convert this into a selector, we want to select a list's second element, second child element, second child element's hover state, and give it a font size of 1.2 em. 1.2 em. Okay. So according to this, if I hover over the second element in the list, it will have a font size of 1.2 times. Okay. So what are the implications and how we actually use this in real world? So आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ इसके लिए. फॉर एग्जांपल हमें एक नेविगेशन बनाना है जैसे हमने देखा है Amazon में. So if we want to create a navigation like we seen in Amazon, I'll try to create a simple one. ULLI times 5. Okay. So one is our home page, one is our about page, one is our services page, one is our careers page, and one is our pricing page. Now, if we want to style it according similar to what navigation is done like on the top, we can do this like that. We can target the specific. First, we can change the styling of the li elements to inline blocks so that they are on the same line. So we can target all the LIs like this and give them a display of inline block by which they are inline, but we can still style them, change their sizes. Okay, by this they are on the single line. Now we want to give them a hover state. मतलब कि we want to हम इनको देना चाहते हैं hover state जिन पे जब हम इन पे hover करें ये अंडरलाइन हो जाएं और इनका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाए या कुछ और हो जाए. We'll take blue. So nav ul li hover state. So first color needs to change to blue, or and this needs to be underlined. Okay. So now if we hover over it, the color changes and they become underlined. So in this we have used the descendant selectors, or we can directly style using directly go using the. Okay.
So now we also know that the allies will always come in the UL, so we can remove them because we are using descendant selectors. क्योंकि हम descendant selectors का use करें, हमें UL की जरूरत नहीं है because we know li will always come in a UL or an OL. So if we do this, it will stay the same. और हम किसी specific element को target कर सकते हैं और उसे show कर सकते हैं कि we are currently on this page. So nth child, assuming we are on the second page, we are going to make it bold. Okay, to represent we are currently on this page. Okay, so now we'll talk about the next topic, which is a more advanced CSS topic called box model and box sizing and positioning actually. Okay, so now we'll talk about the box sizing. So before doing that, we need to discuss about something called box CSS box model. The better explanation can be given through one second. Okay, through a single diagram itself. Okay, तो CSS में एक सबसे important टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल. और बॉक्स मॉडल को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे स्टाइलिंग के लिए. द बॉक्स मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर स्टाइलिंग अवर एलिमेंट्स. तो हमारे हर एलिमेंट एक बॉक्स मॉडल को रिप्रेजेंट करता है. दैट हैज 4 layers. So our element always has a box model which has 4 layers. One is the content layer, in which the content is actually in which for example our text content is actually there. Okay. For after that we have a secondary layer called padding, which is a layer between the content and the border. हमारे पास एक सेकेंड लेयर है जो हमारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में एक स्पेस है जिसके थ्रू हम एलिमेंट को कुशन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं. अब बॉर्डर हमारे पैडिंग और कंटेंट के बीच में आता है जिसको स्टाइल करके हम अपने एलिमेंट्स के आगे पीछे बॉर्डर्स दे सकते हैं. ओके, those borders can be styled solid, dashed or dotted. And after that we have a particular margin. Margin is the outermost space that separates one CSS box element box to another from another CSS element block. So margin का मेन काम यह है कि दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से स्पेस अवेलेबल प्रोवाइड करें. By doing that, we can easily explain the multiple elements. So let's work with an example here. If I go back, okay, so we'll have an element called box and put this is a box. And if we style these things, okay, to proper explain this, we'll form the same image which was there earlier. Okay. Um, we'll also put a body background color. Okay. So if I put another element here, you will be able to see the margin spaces. Okay. Now, अगर हम इसमें बात करें तो हमारा कंटेंट हमारे इस ब्लॉक में ही है सिर्फ. Other than that, content is nowhere here. Okay. So now but because of width and height, we have a content size of this much length. एंड आफ्टर दैट और इसके बाद हमारे पास एक 20 पिक्सल्स का एक पैडिंग अवेलेबल है हमारे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में. हमारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में 20 साइज का पैडिंग अवेलेबल है. हमारा बॉर्डर 5 पिक्सल्स का हमारा बॉर्डर अवेलेबल है, वो बॉर्डर थिक है. और आफ्टर दैट द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द स्क्रीन एंड हमारा एलिमेंट, दैट इज 30 पिक्सल्स, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा बॉक्स मॉडल.
हमारा बॉक्स मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है हमारी पोजिशनिंग। ओके, तो पोजिशनिंग है क्या? तो द पोजिशनिंग अलाउज अस टू कंट्रोल वेयर एलिमेंट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। अगर हम इसे हिंदी में बोलने की कोशिश करें, तो पोजिशनिंग हमारे एलिमेंट को कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है, जिसके थ्रू हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कि एलिमेंट होना कहाँ चाहिए। ओके, तो हमारे पास 5 टाइप की पोजिशनिंग है। देर इज अ स्टैटिक पोजिशनिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट डू इट हेयर। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक पोजीशन, इसके लिए हमारे पास टैग होता है पोजीशन। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो पोजीशन होती है वी कॉल इट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि स्टैटिक का मतलब ये है कि जहां पर एलिमेंट नॉर्मली दिख रहा है वो वहीं पर ही रहेगा, और हमारे डॉक्यूमेंट में भी वहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करूँ, दिस इज अ टेक्स्ट, तो हमारे एलिमेंट एक्चुअली हमारा यहाँ पर ही, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ कहाँ पर दिखेगा, 1 सेकेंड। तो हमारा एलिमेंट एक्चुअली यहाँ पर है, हमारे डॉक्यूमेंट के फ्लो में। ओके, सो एक्चुअली हमारे एलिमेंट यहाँ पर पोजीशनड है। तो बट अगर हमें और कोई पोजीशंस का यूज़ करना है, तो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यूज़ करने की कोशिश करें रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये है कि उसकी हम किसी द पोजीशन रिलेटिव मींस कि वी कैन मूव द एलिमेंट लेफ्ट राइट अप और डाउन रिलेटिव टू द पोजीशन विच इट शुड नॉर्मली बी। मतलब कि पोजीशन रिलेटिव रखने के बाद हम एलिमेंट को उस तरीके से स्टाइल पोजीशन कर सकते हैं रिलेटिव टू व्हाट इट वाज अर्लियर। तो पोजीशन करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, जैसे कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, अगर हम किसी चीज को इफ वी पोजीशन समथिंग रिलेटेड टू बेस्ड ऑन टॉप, ये दिस विल मूव अवे फ्रॉम द टॉप। मतलब कि अगर हम टॉप की वैल्यू को बड़ा चेंज करने की कोशिश करें, वो हर चीज रिलेटिव टू द टॉप एलिमेंट्स टॉप पोजीशन रहेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव करूं टॉप 20 पिक्सल्स, it will move 20 pixels away from its normal position from the top. so ऐसा हम देख सकते हैं कि प्रीवियसली हमारा एलिमेंट काफी ऊपर था, बट हमारा एलिमेंट अब 20 पिक्सल्स नीचे आ गया। सिमिलरली अगर हम इसकी बाकी पोजीशंस को भी चेंज करने की कोशिश करें, लाइक लेफ्ट 30 पिक्सल्स, हमारा एलिमेंट 30 पिक्सल्स मूव करेगा, बट दिस विल ऑलवेज रिमेन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पोजीशन। मतलब कि दिस विल ऑलवेज स्टे अकॉर्डिंग, दिस विल दीज पोजीशंस रिलेटिव पोजीशंस विल ऑलवेज हमेशा उसकी ओरिजिनल पोजीशन से रहेंगी। मतलब जहां पर ये ओरिजिनली रहना चाहिए था वहां पर एक खाली स्पेस हमेशा रहेगी। मतलब कि अगर मैं इसे थ्री इसको अपनी स्क्रीन से हटा ही दूं, हम देख पाएंगे हमारा एलिमेंट की स्पेस अभी भी ऑक्यूपाइड है, बट हमारा एलिमेंट कहीं और मूव हो गया है। तो दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एनी रिलेटिव स्टाइलिंग। बट इसके बाद हमारी नई एक और देर इज अनदर पोजिशनिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट से हम समझ पा रहे हैं कि हमारी एक्चुअल पोजीशन ही चेंज हो जा रही है। जैसा कि प्रीवियसली था हमारी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारी पोजीशन, बट इन एब्सोल्यूट आवर पोजीशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंटायर स्क्रीन, और एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू इंटायर ब्राउजर स्क्रीन। सो इफ वी मूव एन एलिमेंट, अगर हम कोई एलिमेंट मूव करने की कोशिश करें यूजिंग एब्सोल्यूट, हमारा वो एलिमेंट हमारी डॉक्यूमेंट से फ्लो से बाहर आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसे सेव करूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटिव पोजीशन जहां पे स्पेस ऑक्यूपाइड थी, ये टेक्स्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो इफ आई सेव दिस, टेक्स्ट शिफ्ट अपवर्ड्स, एंड इफ आई ब्रिंग द एलिमेंट बैक, एलिमेंट हमारा वापस आ गया। तो हमारा एलिमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट की फ्लो से बाहर निकलकर कहीं भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको स्क्रीन के एज पे रखने की कुछ चाहें, स्क्रीन के साथ टच और टॉप पे टच कर सकते हैं, हम इसको माइनस करके स्क्रीन के बाहर निकाल सकते हैं, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है। बिकॉज हमारा एलिमेंट अभी डिव है, तो इसका कोई पेरेंट नहीं है।
बट अगर इसका कोई एलिमेंट होता, जैसे कि हमारा कोई पोजीशनिंग यहाँ पर होती है एलिमेंट की, पेरेंट की, और वो खुद और वो उसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट करते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होता। बट अब हमें इसको, क्योंकि हम इसको अवॉइड करना है, तो वी कैन यूज अ स्टाइल कॉल्ड फिक्स्ड। फिक्स्ड इज सिमिलर टू एब्सोल्यूट, बट इसमें क्या होता है, हम अपने पेरेंट एलिमेंट की जगह हम अपनी स्क्रीन के पोजीशन के हिसाब से होते हैं, विच मीन्स मैं हम वी आर 10 pixels away from the top of the screen and minus 30 pixels according to the padding. If I remove the padding, if I remove the padding, what we'll see is we are touching the screen entirely. And if I remove the top as well. Okay, so what fixed does is that it is relative to the screen itself and not according to the document. मतलब कि ये हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग है और नॉट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। सो अगर मैं इसमें स्क्रॉल अवेलेबल कर दूं, तो हमारा ये एलिमेंट हमेशा हमारी स्क्रीन पर रहेगा बिकॉज इट इज फिक्स्ड टू द स्क्रीन। ओके, so after that, there is another style called sticky, but that is a use case thing, and when we require it, we'll use it at that time. Okay. बॉक्स मॉडल की बात हमने बात कर दी है। Okay, now if we undo all this, we'll move to our next topic called box sizing. And what is box sizing? Box sizing. Okay, so by default, CSS uses a box model called content box. That means the entire element's dimensions, that is the size of the element, is dependent upon the content width and height. मतलब कि जब भी हम एलिमेंट को कोई जब भी हम बाय डिफॉल्ट हमारा CSS एक बॉक्स मॉडल यूज करता है जिसको हम कहते हैं कंटेंट बॉक्स मॉडल, जिसमें हमारा एलिमेंट के हर स्टाइल, साइजिंग, विड्थ, हाइट, हर चीज हमारे कंटेंट के हिसाब से होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी एलिमेंट का साइज बढ़ा भी दें, तो और कोई उसका साइज बढ़ा दें, तो वो हमेशा कंटेंट का साइज बढ़ाएगा। और वो हमारे पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट मार्जिन को काउंट नहीं करेगा हमारे साइजिंग में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ स्पैन, फॉर एग्जाम्पल if I have an element, let's say div, and I gave it a width of 20 pixels, and put a content, this is a div. Okay, just for the sake of understanding, let's say we'll keep it this way. So, and also we'll put margin and padding to represent the the box model itself. 30 pixels, border 10 pixels solid black, and a padding of 10 pixels as well. So according to this, we can see that the boxes, even though we have put the div's width as 20 pixels, the entire box is still a way larger than 20 pixels. As we can see on the screen, it is of 60 width. But this should not be possible because we have given a width of 20 pixels. That is what content box means. मतलब कि क्योंकि हमने कंटेंट मॉडल का यही, बॉक्स मॉडल का यही मतलब है कि हम चाहे हम कोई भी विड्थ दे दें, वो हमारा सिर्फ कंटेंट के विड्थ को चेंज करेगा, नॉट द एंटायर कंटेंट इटसेल्फ। सो इसके तो इसीलिए हमारे पास कंटेंट विड्थ के अलावा, कंटेंट बॉक्स के अलावा एक और बॉक्स मॉडल है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर बॉक्स। ओके, सो व्हाट डज बॉर्डर बॉक्स मीन? बॉर्डर बॉक्स में हमारे पास हमारी विड्थ और हाइट के लिए कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर तीनों का यूज किया जाता है हमारे साइजिंग के लिए, विच मीन्स इन द बॉक्स बॉर्डर बॉक्स मॉडल, विड्थ और हाइट के लिए हमारे कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर को भी इंक्लूड किया जाता है। इससे हमारे लेआउट के लिए कैलकुलेशंस करना ज़्यादा सिंपल हो जाता है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज बॉर्डर बॉक्स इन मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। तो अब अब क्या चीज़ है कि हम हर एलिमेंट को स्पेसिफिकली बॉर्डर बॉक्स देने की जगह देते रहें, उसकी जगह हमारे पास एक स्पेशल कॉमन प्रैक्टिस है हमारे वेब डेवलपमेंट में
जिसमें हम यूज करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। स्टार का मतलब है यूनिवर्सल सिलेक्टर है एंड इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल। सो हम इन द बिगिनिंग ऑफ द CSS हम जनरली बॉक्स साइजिंग को, हर एलिमेंट को बॉक्स साइजिंग दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स की। इससे क्या होता है कि हमें हर एलिमेंट को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं देना पड़ता। सो एवरीवन इज थिंकिंग कि व्हाई यूज बॉर्डर बॉक्स। सो in order to understand why we use border box, we need to understand how layouts are actually made. So we know we want to position and we know want to change sizes of the boxes and change layout of the elements. But if everything is relative to the content itself and not the actual padding and the border, the total width still remains the what is of the content itself, which causes some confusion in the layouts. तो मतलब अगर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अगर हम बॉर्डर बॉक्स नहीं यूज करें तो, और हम जस्ट कोशिश करें अपने यूआई में साइड विड्थ और हाइट को खुद मैनेज करने की या लेआउट्स को चेंज करने की, तो हमारे कंटेंट का साइज ही डिपेंड मानेगा, कंट्रोल करेगा कि हमारे एलिमेंट का साइज क्या होना चाहिए, which becomes very confusing in the long run और long scale. So इसलिए हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि हम बॉर्डर बॉक्स को ही यूज़ करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं यूज़ करने की। यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन कि आपको कैसा प्रेफर करते हैं, आपको क्या स्टाइलिंग ज़्यादा बेटर लगती है। What I generally do is I just set these things on in the beginning to as a border box, and according I style everything according to that, because इसको यूज करने से हमारा स्टाइलिंग आसान हो जाती है। Okay, so now what is okay, now this was the general till now what we had was a general overview of the CSS. Now we will move on to the modern layout structures. Okay, now we will discuss few topics called one is called flexbox and another is called grid. Okay, first of all we need to understand why do they exist. Previously what we did was, in order to position things and in order to create layout for things, what we used earlier was mostly positioning, the position top, left, right, and something called floats, which caused a lot of problems earlier. So now floats have not been deprecated, but they are not recommended not to be used. But because CSS has become very powerful nowadays, so we have two types of different layout systems called flexbox and grid, which make the layout designing very simple and flexible. तो अगर हम इसे हिंदी में कहने की कोशिश करें, तो जब हम पहले लेआउट डिजाइन करने की कोशिश करते थे, तो हम ज्यादातर पोजिशनिंग पर ही डिपेंड करते थे, रिलेटिव पोजिशनिंग, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, फिक्स पोजिशनिंग, जो करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था बड़े पेजेस के लिए। तो इसीलिए ओवर द टाइम CSS ने हमारे पास काफ़ी स्टाइलिंग लेआउट अवेलेबल किए, जिसमें से हमारे मेजर लेआउट्स हैं फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड्स। अब फ्लेक्सबॉक्स क्या हो गया? अगर इन फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड का मेन एक्सप्लेनेशन क्या दी जाए, द इजिएस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन देम, फ्लेक्सबॉक्स को हम कंसीडर करेंगे वन डायमेंशनल और ग्रिड को हम कंसीडर करेंगे टू डायमेंशनल स्टाइलिंग लेआउट डिजाइनिंग के लिए। Though they can be used for alternative as well, but it is recommended to understand them in such a way. Okay, so let's discuss about flexbox. Flexbox actually means flexible box layout. Okay, so flexbox layout is mostly used to arrange elements in one dimension, either as a row or as a column. So it is mostly preferred because it has the ability to automatically adjust and distribute spaces inside a parent container. मतलब कि फ्लेक्सबॉक्स एक ऐसा सिस्टम है जो एलिमेंट्स को सिर्फ एक डायरेक्शन में अरेंज करने के लिए यूज होता है, या तो वो रो हो या तो वो कॉलम हो। जिसके लिए जो हमारे ये चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है जब हमें कोई ऐसी चीज़ को कंटेन स्टाइल करना होता है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट और डिस्ट्रीब्यूट करे अपने आप को इनसाइड अ पेरेंट लेआउट कंटेनर। ओके,
इसके साथ कुछ की फीचर्स और की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें हमारा सबसे मेन चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या होगा, हम किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स में किसी भी पेरेंट एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास अदर अवेलेबल स्टाइल्स प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज जस्टिफाई कंटेंट। ओके। Another is align elements, align items. The remaining ones are commonly known as flex, grow, flex shrink, and flex uh, bases. And other is the basic ones are flex wrap and flex direction. These are the main properties which are used with along with flexbox. मतलब कि ये सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यूज करते हैं फ्लेक्सबॉक्स के साथ. The most common properties used are these ones, but flex grow, flex shrink, and flex bases have their own purpose as well. So let's start by an example. Okay. So first, we'll go back to an example which we discussed earlier, which was the nav one. So let's go with the nav one. Oh, one second. Okay, let's go with the nav one. Nav ul. Let's keep it simple. Nav la and okay. Okay, let's keep it back. About services, careers, and pricing. Okay. So for now, what we have is that we have a list of links which are it is not a list, but we have a number of anchor tags which are inside a nav element. So now what we want to do is we want to use the flex box to style them properly in the x direction. So let's begin by styling them. We'll give the nav because one thing we need to understand is that the in the flex box the entire control of the layout is with the parent itself. Yes, the element has their own properties, and elements can also contribute to the layout, but parent controls how these things will appear. But control is also given to the elements itself. That is, the elements can also decide what how they want to appear in the layout itself. So this will be discussed in later. But let's first start with the display flex, which gives them a flexible layout. For so if I try to show them, you can see that the elements, instead of occupying the entire width, we are only occupying a particular section, and the remaining width is dashed or set as unused. So now, what justify content does? Justify content decides how a content should appear in a single line. That means how it should be arranged in a how they should be spaced, how they should be arranged in a particular line. Okay. So for better understanding, let's just go with the in the developer tools, and we can see it better here. Okay. So now what we'll do, we'll give it a justify content. By default, it is start. Okay. Now if we see in the flexbox, we have different things. Okay. If in the justify center, we'll see there are six options which we can use. By default, there is one. By default, it is set as start, but we can also choose that we want to put it as center at the center. Okay. We can decide we want to put it at the start. We can decide we want to put the elements at the end. We can decide that the elements need to have a equal space between them. So every element will have a uniform space between them. We can put a space around, which means the content will have equal spaces around themselves.
which means on the left, this space and this space will be equal for every element. That is the left and the right element spaces. But in the space between, only the space between the elements will be equal. And other than that, we have a space evenly, which means that the elements will be spaced will be spaced equally from the sides and equally and separately equally between each other. मतलब कि अगर हम इसमें स्पेसेस को देखें, हमारी एक्सटर्नल स्पेसेस ज़्यादा होंगी और हमारी इंटरनल स्पेसेस थोड़ी सी कम होंगी बट इक्वल होंगी. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी शो कर सकते हैं हम अपने वन डायमेंशन में हमारे एलिमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए. अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव अनदर एट्रीब्यूट कॉल्ड अलाइन आइटम्स. अलाइन आइटम डिसाइड करता है कि हमारा एलिमेंट एक वन डायरेक्शन में कैसा दिखना चाहिए. It should be centered, top, end, or remove. This is much more visible if I just change the height of the parent container as 400 pixels. Okay. Now what? Okay. One second. Okay. Now let's just go from here. Okay. Height as 400 pixels. You can see we have put a height of 400 pixels or each nav element. Let's just keep it short. 4 pixels. Okay. 40 pixels is enough. So for every element has a nav of 40 pixels. So now here align items will be much beneficial. In this, align item describes in the one dimensional how the element should be aligned vertically. So if we put things as center, the elements will be put as center of the height itself. If we put them at the start, they will be put at the start, and if we put at the end, they will be pushed down at the bottom of the container. So by using these flex styles, we can create different and complex layouts such as navigations. Also, as I told you, there are different styles as well. For example, flex direction, which can describe which direction we want to go in one dimension. For example, by default, we have a row, but we can also go vertically, which means by column. And in that case, justify content and align items direction reverses, which means align items will now work horizontally, which means if we put them center, the elements will come to the center. And if we and justify content will do the same in the opposite direction itself. Similarly, we can do row reverse, which reverses the order of the things, and we can do column reverse, which can reverse the order vertically. Okay. Okay. So now why we discuss this is it's okay. Okay, this is a very simple example, but what I can show you is one of my favorite websites for this case, called real time colors. Okay, one second. Okay, so what you can see here, if you see, the entire website is good looking, but if I tell you that the entire thing is built upon the flexbox, if we go in the styling, you can see the entire body is flexbox, which means every element is made is a flex item, and every element can has been styled particularly. So what I can tell you is flexbox is not in only for these things which I am discussing here, but it can be entirely used to build up web pages and very complicated layouts. So अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें तो फ्लो फ्लेक्सबॉक्स सिर्फ एक छोटे से nav बार को बनाने के लिए नहीं यूज किया जा सकता, इसको हम बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड पेजेस को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. Okay, so now let's directly go to the grid one instead of wasting time. So what is grid?
Similarly, what we discussed earlier, the flexbox is one dimensional, grid is considered as two dimensional. That means it has rows and it has columns. One second. Okay. Now, why we need to use grid if we have uh, flexbox? Okay. CSS grid is a very powerful layout system that is used to create two-dimensional layouts, meaning we can control things in the rows as well as in columns at the same time, unlike Flexbox, which was only one dimensional. मतलब कि CSS ग्रिड को यूज करके हम एक बहुत पावरफुल कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हैं लेआउट का, जो टू डायमेंशनल हो, मतलब हम एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में दोनों में एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं. ओके. ओके. सो ग्रिड में हम फुल ग्रिड स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें पूरा कंट्रोल है हम कैसे दिखाना चाहते हैं चीज़ों को. इसमें हम डैशबोर्ड, इसके थ्रू हम जनरली क्या करते हैं, डैशबोर्ड्स, टेबल्स, गैलरीज या इंटायर वेब पेजेस भी डिजाइन कर सकते हैं इफ वी चूज टू डू सो. ओके. सो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या आ गए. Similarly to Flexbox, we have a display grid on the parent container, just by which the child elements are put in a grid. मतलब कि हमारे पेरेंट एलिमेंट के ऊपर एक ग्रिड कंटेनर होना चाहिए. पेरेंट एलिमेंट के ऊपर हम डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम उसके इनर एलिमेंट्स को टेबल एज अ ग्रिड स्टाइल लेआउट में डिजाइन कर सकते हैं. After that, we have special attributes or special properties in the CSS, which are for the grid, which are grid template uh, columns, grid template rows, and fairly common property in the Flex as well called gaps. Okay. Before making anything complicated, we'll just start making a table first. Okay. So, okay. So let's start. Key one set div. There are six. There are going to be six divs with the content. This is a box grid. Okay, so now what we can do is uh, we can call first we can style the inner divs by saying, by giving them a height of 50 pixels. No, height doesn't matter. We can give them a color or background color of blue, uh, light blue, I guess. A border of 1 pixel solid light cyan, and a border radius of 5 pixels. Okay. Okay. Now, by doing this, okay, as I said in the earlier Flexbox, as I said, the sizes can be controlled by the Flex element itself. But in the grid, the elements themselves have no control over their heights and widths. Yes, they have control over the internal elements heights and widths, but they cannot control their own height and width. मतलब कि हमारे जो भी ग्रिड के अंदर के ग्रिड कंटेनर ग्रिड जिस पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले ग्रिड लगा है, उसके इंटरनल चिल्ड्रन के ऊपर अपनी विड्थ और हाइट का कोई कंट्रोल नहीं रहता. दोज आर ओनली कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट एलिमेंट. सो अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल डिव को जो डायरेक्टली अगर मैं इस पर क्लास लगा दूँ ग्रिड की, so if we put a display grid on the grid element, for example display grid, we'll see that now if we try to hover over them in the CSS, you will see in the inspector, you will see there is a grid attribute given to them. So now we can exploit this grid to form tables and different grid styles. For example, first we'll go with the grid template columns. Okay, what does this attribute do? The grid template column decides how many columns we will have in our grid. So for and
it will decide what are the sizes of those columns are as well. So let's say कि we want to have two columns which have a fixed size of 30 pixels. So we have to tell it two times that we need one column of 30 pixels and another column of 30 pixels. So by doing that, it will make two columns of 30 pixels each, and it will control the rows automatically by itself. So if we now that it is not dependent, the column sizes are individual, so we can do anything with them however we want. For example, one can be 60 pixel, one can be 30 pixel, 70 pixel, one can be 120 pixel. It doesn't matter. We can control everything. Now the thing is, sometimes we have, for example, we want to create five columns. We can't always say 50 pixels, 50 pixels. So for that, we have a shorthand function called repeat, in which the first attribute will be the number of columns, and second one will be the size we want. For example, 50 pixels. So let's say I want five columns with 50 pixels. So it will give me five columns with 50 pixels each. So now by doing this, what we can do is we can control how many columns we have, and similarly, we can control the rows as well. How many rows do we require? For example, if we have these rows, and now as we do not, as we okay, there is also one thing. By default, grid assumes that you have only one column. So if you only decide to put a row, if you want multiple columns, you have to specifically put how many columns you want. So for example, I will put here 50 pixels, one column, and 120 pixels, one column. So it will automatically do these things, where it will try to divide the components, where it will try to divide the components it has, and the columns always take priority over the rows. In specific cases, it cannot, but mostly it takes. Okay, so for right now, okay, okay, now for columns, we also have a specific unit instead of putting sizes. Okay, the main thing about grid is that it is also a block level element. If we put anything with a grid, it is a block level element and it has a size of entire screen, or at least the entire parent component. So what we can do is, instead of directly using the fixed sizes, we can use one fr describing the total fraction of sizes what we need. So for example, if we use one fr and one fr, which means we are dividing the entire screen into two fractions, and both fractions have a particular size of these. Now this can be altered in form of percentages as well. 1 second, I'll just check something. Okay, thank you for waiting. So now what we can do is, I told you that the fractions are summed and then divided according to the numbers they have. So for example, if I have 0.5, then the entire fraction becomes, the entire screen is divided into 1.5 fractions. And according to the proper ratio, we'll have 0.5 fraction over 1.5, which means the first part will have one third of the screen, and the second half will have 1 over 1.5, which means a 2 by 3 part of the screen. So if we save that, we can see that the first column only has 1 by 3 part of the screen, and the second column only has 2 by 3 part of the screen. So by doing these things, we can control how our grids will be positioned. Similarly, in the grids, we also have the justify content and align items properties, which are similar to what we want. But as I described, we also have a property called gap. Gap defines the spaces between each column and row. For example, if I put a gap of 20 pixel, it will give a horizontal gap and a vertical and a horizontal gap between the elements. We can also, using the gap, if we only give one element, it will put both the x and the y gap as same.
But if we put give two elements, we can describe how we want to provide the gaps in elements individually. So now today's session is going to be concluded on here. What we have discussed till now is the basics and the slightly advanced and the advanced versions of the selectors, and what are pseudo classes, and there are also something called pseudo elements itself. For those, I would recommend that you try to look up in the MDN document and try to understand them, try to understand and do practicals with them itself by using the documentation, because those are the things that are better learned by themselves. And I recommend you to further explore what are flex boxes and what are the properties I told you but did not show, because those properties are better learned by themselves when you are practicing on your own. And on the grid itself, you can search, you can look up for the documentation as well. We have a very beautiful site called called CSS. And if you try to search for CSS grid, you will see CSS tricks or something it is called. It has very beautiful explanation of the flexbox and the grid systems. I would recommend you to explore those, because those are very well defined and well documented things, and with proper examples, which will also give you exercises to practice yourselves. So today I will end this session here. Tomorrow I have given you exercises, and I'm recommending you to try those. And tomorrow we will discuss more about the JavaScript and how we can target elements and select elements using JavaScript and learn about those elements and extract information through those elements itself. So thank